Hello everyone and welcome to Career Launcher. So, as we all are aware that we are having the Hindu analysis from Monday to Saturday at 8 p.m. So we are here with that. Is everything fine? Please write yes in the comments. So today, Saturday, we are having the class. I think I'm meeting you after a long time. We had some holidays, weekends, etc. Holidays, I would say. And I hope you all are back and you have got the momentum back. I hope so. Yes, वापस मोमेंटम पर आ गई आई एम श्योर. ठीक है, बीच में गाड़ी स्लो हो गई होगी. आई होप you all were celebrating festival, but now you have to restart your car, है ना? Because now the examination is quite near. So yes, fine. ठीक है. अच्छा, आज 25th अक्टूबर है. So yesterday was 24th October. What was 24th October? Why is 24th October so famous? क्या खास हुआ था 24 अक्टूबर को? Anyone? Yes, United Nation Day. Actually, we celebrated the 80th United Nation Day. And 1945, it actually came into force. 24th October 1945. Yes, United Nations Day. Okay. So yes, hopefully we are having 6th principal organ of United Nation. By the way, where is the headquarter of United Nation? If I ask you headquarter of United Nation, then what should be the answer? UN का headquarter कहाँ है? It's actually in New York. So 5 principal organs are headquartered there. One is in The Hague, Netherlands, but by default, if someone is asking you where is the headquarter of United Nations, the answer is New York. Okay? Yes. Okay, fine. So let us begin with today's class. And the first page actually of the newspaper was the main article is actually a tragedy, which unfortunately happened in the state of Andhra Pradesh. 19 passengers burnt to death as sleeper bus catches fire in Andhra Pradesh. So what actually happened was, according to the news reports, so the bus was going from Hyderabad to Bangalore with 44 passengers. So let me show. So here is Hyderabad. This is Bangalore. And perhaps they were traveling on this route, something like this. What happened was it hit a motorcycle and it caught fire. So how it happened, we are not 100% sure. But whatever the news says, that it is believed to have hit and dragged the motorcycle, triggering the spark and ignited its fuel tank. So most likely something ऐसा कुछ हुआ होगा कि बस से टक्कर लगी बाइक में और बाइक में आग लग गई, उससे बस पे आग पकड़ लिया, something like that. So 19 people, including 2 children, were burned to death. Their charred bodies after a Hyderabad, Bangalore sleeper coach, sleeper bus आप जानते होंगे, है ना? So there is setting एक दूसरा होता है sleeper जिसमें सो के जाने को होता है ना, overnight journey जो होती है. And so somewhere here in Tekor village in the outskirts of Kurnool in Andhra Pradesh. So Kurnool तो somewhere here यहीं पे कहीं होगा, Kurnool यहीं पे कहीं पे पड़ता होगा. In Andhra Pradesh, this incident happened. Actually, that is what you should be doing. So the bus owned by V Kaveri Travels was carrying 44 passengers, including 4 children and 2 drivers. The police confirmed that 27 people, including both the drivers, escaped the inferno, while 19 charred bodies were recovered from the cut-in bus. So 27 लोग बच गए, दोनों ड्राइवर भी, but 19 लोगों की unfortunately मौत हो गई. Motorcycle rider was also killed. तो जो मोटरसाइकिल चला रहे थे, उनकी भी डेथ हो गई. Okay, but I was reading this actually. Just before beginning the class, I was pillion rider मतलब होता है जो बाइक के पीछे बैठा होता है, the person who is sitting next to the rider, है ना? So this guy has survived. यानी जो चला रहे थे उनकी डेथ हो गई, बाइक जो चला रहे थे, लेकिन जो पीछे बैठे थे वो बच गए. तो किस्मत की बात होगी. So that is what जो कि यहाँ पे लिखा है कि देखो the motorcycle rider was killed, but here actually the article says that the person who was sitting at the back, pillion rider of the motorcycle, he survived. जो पीछे बैठे हुए थे वो कुछ. तो ये सब बात हुई. बॉडीज ऑफ द डिसीज have been identified. वही DNA fingerprinting मैंने आपको बताया है. Especially I was discussing this when the unfortunate Ahmedabad plane crash happened. उस टाइम पर भी याद होगा DNA fingerprinting, DNA matching की बात हुई थी. You remember? How many of you remember? चलो मैं samples from the blood relatives are being collected to aid the identification. अच्छा मैं आपको बताता हूँ. So for example, there is a dead body.
ओके, ये मैंने बता रखा है इसलिए आई एम आस्किंग। आई डिस्कस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अहमदाबाद प्लेन क्रैश। मान लो कि प्लेन क्रैश हुआ, ये कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जहाँ डेड बॉडी है, बर्न्ड बॉडी है, तो बर्न्ड बॉडी आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट बाय फेस टू आइडेंटिफाई। सो दैट इज व्हाई डीएनए मैचिंग इज डन। नाउ देयर आर 3 पीपल, 3 लोग आए, एक है बॉडी की वाइफ है जो मोस्ट लाइकली, मतलब पीपल आर गेसिंग कि फलाना सा की बॉडी है, एक्स एक्स आदमी की बॉडी है, तो उनकी वाइफ है। सेकंड इज ब्रदर, द थर्ड इज फादर। These 3 person has come to verify it. Who should be the person, the best person in this case, that he or she should give his or her DNA to match it with the dead body? कौन सा आदमी सबसे परफेक्ट रहेगा, वाइफ, ब्रदर और फादर में? वाइफ, फादर? ना ना, नॉट फादर। मैंने बताया ही आपको, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट अहमदाबाद प्लेन क्रैश, उस टाइम पे बहुत न्यूज में था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए मैचिंग। अच्छा, इस डेड बॉडी से अगर मैच कराना होगा तो पेरेंट्स किसके सेम होंगे? पेरेंट्स सेम किसके होंगे? ब्रदर। यस, नाउ यू आर राइट। देखो, ब्रदर जो होते हैं, दो भाई है, दोनों के पेरेंट्स सेम होते हैं, राइट? फादर और बेटा के पेरेंट्स सेम नहीं होते हैं ना। आई टोल्ड यू एट दैट टाइम आल्सो। वाइफ से तो होगा ही नहीं, बिकॉज ब्लड रिलेशन तो टेक्निकली नहीं होता, मैरिड होता है ना। यस, ब्रदर, बिकॉज ब्रदर जो भाई होता, भाई या बहन के जो पेरेंट्स होते हैं, फादर मदर सेम होते हैं, सेम, राइट? सो द बेस्ट थिंग इज दैट। ठीक है, अगर अगर फादर है, ठीक है, फादर से मैच कर सकता है, बट द बेस्ट इज एक्चुअली, हाँ, कि आप सेम पेरेंट्स से वाले से मैच कराइए। ठीक है, तो ये बता क्या रहे हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट टू एस्टैब्लिश देयर आइडेंटिटी, सैंपल्स फ्रॉम देयर ब्लड रिलेटिव्स, दिखा ना, आर बीइंग कलेक्टेड टू एड आइडेंटिफिकेशन। बस समझ नहीं आया क्या टेस्ट? ओके, मैं बताता हूँ। एक्चुअली हैड डिस्कस ड्यूरिंग डीएनए सैंपल, होता क्या है, दिस इज एनिमल सेल। ठीक है, हालांकि ओवल शेप्ड होता है, ऐसा कुछ होता है। एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए होता है, ऐसा तो जानते होगे, राइट? ओके, नाउ जब डेथ हो जाती है, स्पेशली जब बर्न्ड डेथ होती है, यानी किसी के एक्सीडेंट हुआ और बॉडी जल गई, तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि किसकी बॉडी, किसकी लाश है ये, किसको दिया जाए। रिलेटिव आ रहे हैं पहचानने के लिए, वो खुद नहीं पहचान पा रहे क्योंकि बॉडी जल गई। जैसे प्लेन क्रैश में या अनफॉर्चुनेटली ट्रेन क्रैश, ये सब में होता है, प्लेन एक्सीडेंट या जिसमें आग लग जाती है, तो उसको डीएनए मैचिंग से मैच कराया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं उस टेक्नोलॉजी को। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये देखो मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए ये एक्स है, ये बर्न्ट बॉडी है, ठीक है। अब लोग बोल रहे हैं, मान लीजिए 10 लोग आगे, 10 लोग क्लेम करेंगे कि मेरे मेरे रिलेटिव भी उसमें थे और मोस्ट लाइकली वो मिसिंग है, तो उनके भाई फाइंड आउट किया जाए कि अपने ब्रदर जो उनके मान लीजिए एक्स है, तो इनके जो ब्रदर हैं, आप अपना डीएनए दीजिए, गिव मी योर डीएनए, और मैच कराया जाएगा। तो भाई का जो डीएनए होता है ना, आई थिंक 75% के आसपास तक क्लोज होता है, मैच करता है, 100% नहीं मैच करेगा किसी का भी। ठीक है, आई एम गिविंग रफ आइडिया। तो अगर फादर आएंगे ना, तो फादर से बेटा का, फादर इस बर्ड बॉडी के, तो 50% के आसपास रफली मैच करेगा। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। वाइफ आएंगे तो नहीं मैच करेगा, क्योंकि वाइफ ब्लड रिलेटिव नहीं होती, तो ब्लड रिलेटिव मैच रहता है कि भाई, स्पेशली भाई या बहन सबसे अच्छा है, ब्रदर और सिस्टर, वो आए अपने डीएनए दे, और फिर डॉक्टर चेक करके बताएं कि हाँ, ये इसी की बॉडी, इन्हीं की बॉडी है। ठीक है, ठीक है ना, डीएनए सैम्पलिंग से मैच कराया जाता है बॉडी, स्पेशली जो क्लोज रिलेटिव यानी ब्लड रिलेटिव होते हैं, बेस्ट है ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल है तो फिर फादर या सन, उससे मैच कराया जाता है, फादर मदर या सन से। ओके, दैट्स द आइडिया। ठीक है, तो बिकॉज आपको बॉडी देना भी है ना कि चलो इसकी बॉडी, इसकी डेथ होगी, तो आप अपना फ्यूनरल प्रोफेशन करोगे, फ्यूनरल जो भी आपका तरीका है ना। So of course they will, because people claim body and it's very difficult to verify it, especially if the body is burnt. तो यही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और ये डीएनए मैचिंग कह लो। एंड दिस वाज एक्चुअली इन द न्यूज़ व्हेन अहमदाबाद क्रैश हैपेंड, उस टाइम पर भी ये वाली बात आई थी। ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। सो द बस वाज रजिस्टर्ड इन दमन ड्यू ऑन हेल्प परमिट फ्रॉम अधिकारी, तो ये दमन ड्यू में रजिस्टर्ड थी, बात हो रही, इसमें केस रजिस्टर हुआ है भारतीय न्याय संहिता के अंदर। ठीक है, फॉरेंसिक लैब यही होता है, फॉरेंसिक पुलिस डिपार्टमेंट में फॉरेंसिक लैब होता है, उसमें सब मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो चेक करते हैं सारी चीजें, है ना, ब्लड सैंपल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, डीएनए सैंपल्स एक्सेट्रा। ओके, केस नंबर लगा, ये आपको पता होना। ओके,
एक्स ग्रेशिया अमाउंट का मतलब होता है कि जो जिनको डेथ हुई है, सो दोज पीपल हैव डाइड, द क्लोज रिलेटिव्स आर बीइंग गिवन सम अमाउंट, सो 5 लाख रुपए वर गिवन एंड 2 लाख फॉर द इंजर्ड, दैट इज व्हाट। Okay, let's move on to another article on the first page. NDA to contest Bihar poll under Nitish leadership phase Modi. ठीक है, so आपको पता होगा कि I'm sure you must be aware the Bihar Legislative Assembly election will happen on 6th and 11th November. And the result will be declared, I think, on 14th. Right? So basically, there are two. One is Tejasvi Yadav is the leader of Grand Alliance, or what we call in Hindi as Mahagathbandhan. So this includes the political parties like RJD. Main political parties are RJD, Congress, and the Communist Party of India, the different CPIs. Okay, and the other one is actually called as NDA. So BJP और JDU एक साथ हैं, and these two are called as NDA, National Democratic Alliance. The main parties are JDU of Nitish Kumar, BJP, plus there is one more party, LJP, Lok Janshakti Party of Mr. Chirag Paswan. ठीक है, so these are the things you should be knowing about. तो खैर अभी इलेक्शन होगा, let's see, है ना, we'll get to know about the results on 14th November. Now, there was another article on first page में नीचे साइड में, this is on Delhi edition, ये वाली आर्टिकल थी, MC National Conference bagged 3 Rajya Sabha seats in Jammu Kashmir, BJP pulls off surprise win. So BJP को एक राज्यसभा की एमपी बनी, है ना, एंड 3 राज्यसभा की अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मिस्टर उमर अब्दुल्ला हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर, तो उन्हीं की पार्टी है, तो उनके 3 राज्यसभा एमपी बने और बीजेपी के से एक. नाउ द क्वेश्चन इज हु वोट्स फॉर, द क्वेश्चन इज who votes for Rajya Sabha election and what is the procedure, ये आपको बताना है because we have discussed so many times. Rajya Sabha election क्या प्रोसीजर है? I am waiting for the response. Anyone? बताइए कोई. देखो, so basically who votes are elected MLAs. स्टेट में जो MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दे वोट. ओके, इलेक्टेड MLAs वोट, MLCs नहीं वोट करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम स्टेट्स, दे वोट. And what is the procedure? So procedure of election is PRSTV with open ballot. ये सब close ballot होता है. PRSTV मतलब proportional representation. हाँ, through single transferable vote. I am discussing ये PYQ भी है, transferable vote. Yes, कार्तिक है, very good. हाँ. So PYQ ये आया था 3 years back. It was asked about president. So president का जो transferable close or I would say a secret ballot ये था, भी secret ballot. ठीक है, और राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है PRSTV विद ओपन बैलेट. अच्छा, अगर लोकसभा का इलेक्शन पूछा जाए कि लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कैसे होता है, तो PRSTV नहीं होता उसमें. हो रहा तो ये होगा विद ऑफ कोर्स सीक्रेट बैलेट. इसमें तो स्ट्रिक्टली सीक्रेट बैलेट है, ये तो वाली नहीं ओपन बैलेट का. ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी दूसरे में से सबसे ज्यादा आपको सीट आना चाहिए, वोट आना चाहिए, बस. 50% नहीं भी. वॉइस इज क्रैकिंग. इज माय वॉइस क्रैकिंग? ऐसा है क्या? Is it fine or is it cracking? अभी भी? Is it fine or is it cracking?
पता नहीं। अच्छा खैर, चलो ठीक है, अब तो ठीक होगा ना, कभी कभी हो जाता है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा। लेट्स मूव ऑन। चलो, तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो, राइट, है ना, फॉर राज्यसभा इलेक्शंस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल कास्ट डबल वोट। ये ओपन बैलेट होता है, सिर्फ राज्यसभा का ओपन बैलेट होता है, रेस्ट सब सीक्रेट बैलेट। ध्यान रखिएगा, छोटी सी चीजें मे भी देखना। Okay, now let's move on to editorial. Respect the health rights of India's children. So, it's by a former Union Minister, Srimati Jayanti Natarajan. So actually, I'm sure you must be aware, she's talking in context of the 25 children death. Actually, I'm sure you must be aware. ये हुआ था कि मध्य प्रदेश में we have seen death, unfortunately, because of cough syrup that contain diethylene glycol. Similar कुछ इंसिडेंट राजस्थान में भी हुआ था, एक्सेट्रा। ओके, लास्ट ईयर भी कुछ इंडिया से एक्सपोर्ट्स होते हैं कुछ मेडिसिन, उसमें कुछ इस तरह की चीजें पाई गई थी, इथिलीन ग्लाइकोल या डाइथिलीन ग्लाइकोल, 2022-23 में, 2-3 साल पहले की बात है, उज्बेकिस्तान, गैम्बिया एंड कैमरून में। So these things were in the news. For example, 80 children in Uzbekistan died after this. So खैर, तो इसी पर he's talking about that. One of the concerns of the nation in a news cycle that often highlights mind bites, dogs, and sexism, etc. So we 35 children died. तो regulatory agencies responsible includes, हाँ, CDSC होता है, सेंट्रल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जनरल हेल्थ सर्विसेज इन लोग की रिस्पांसिबिलिटी। अगेन व्हाट्स इशू will include, हाँ, पता नहीं आज क्या हो रहा है। It is cracking a lot. एक मिनट होल्ड ऑन, देखता हूँ माइक सेटिंग्स। I don't know what is the problem. Like, is it fine? पता नहीं आज क्या हो गया। तो ठीक लग रहा है। Because the problem is in the middle of the class I cannot change the mic. वो भी दिक्कत है, नहीं तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। ओके ठीक है, चलो चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। सो दैट इज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट, है ना, एटलीस्ट 20 चिल्ड्रन हैव डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग कफ सिरप। ये काफी न्यूज़ होता है। डाइथिलीन ग्लाइकोल, ये पूछ सकते हैं, इट इज इन द न्यूज़ रिसेंटली, फॉर व्हाट रीजन? तो ये आपको पता होना चाहिए। हार्मफुल है, हार्मफुल इन द सेंस कि जहरीला होता है, एंड इट कैन किल ह्यूमन बीइंग्स, so that is why it was in the news. Reporters that believe it would be advised, etc. हाँ, अभी बात कर रही है आर्टिकल 39F, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, ठीक है। सो ये आर्टिकल 39 है, उसमें आर्टिकल 39F क्या बात कर रहा है? चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन हेल्दी मैनर, राइट। तो अगर चिल्ड्रन जो है मेडिसिन, हार्मफुल मेडिसिन खा के डेथ हो जा रही है, तो 39F का तो डायरेक्ट वायलेशन है ना, तो वही कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी एक्सेट्रा, so she is quoting it, article 39F, okay, regarding directive principle of state policy, है ना। तो बता रहे हैं कि अंडर द 18 years children make up to 39% of India's population. ये खासी बात ही है नहीं, 40% is of course good amount of, हाँ, so then there are also about 10 pieces of legislation with special provision for children, like pre-conception, prenatal diagnostic technique act, to the Aadhaar and many other laws, ठीक है। अब देखो ये वाले लॉ है, इनको कई बार बताया, CVND एक्ट कहते हैं इसको ना, PCPND, व्हाट इज दिस? प्री कंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जैसे आपने सुना होगा, आई मीन आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, दैट बेसिकली finding the
gender of a child before a child is born is prohibited. All sex determination is prohibited by law. पूरा जा क्यों नहीं रहा? What happened? Just hold on for a second. एक सेकंड, just hold on for a second. ठीक है. There were some issues with my laptop. I think it's fine. ठीक है. तो यही उसको मतलब वो बता रही हैं कि चाइल्ड से रिलेटेड बहुत सारे लॉज इंडिया में. ओके, जैसे ये क्यों है? ताकि ऐसा नहीं होता ये था. प्रॉब्लम क्या? फीमेल फोइटिसाइड का इशू था. So they used to find out, the parents used to find out if it is a female, they used to actually kill it. So that is why it has been prohibited by law. तो ये बता रहे PCP एक्ट, देन आधार से रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, है ना. सो दीज आर द थिंग्स ही इज टॉकिंग अबाउट. देयर आर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लाइक चिल्ड्रन हेल्थ इनिशिएटिव, है ना. सो इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीज है बात करने की. सो लेट्स सी, है ना. Children have also died in Gambia, Uzbekistan, Indonesia में इस तरह कुछ हुआ था. India has emerged as a pharmacy to the world, to the global south. Now, what is the meaning of global south? Can anyone tell me? Global south क्या होता है? ये मैंने आपको कई बार बताया, but still I'm telling you, this is actually ब्रांड लाइन. ये मैंने आपको बताया, have I discussed it? और जो ब्लू वाला है वो ग्लोबल नॉर्थ है, डेवलप्ड कंट्रीज. और नीचे वाला जो है ग्लोबल साउथ. सो इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया. इंडिया एक्सपोर्ट्स मेडिसिन टू डिफरेंट कंट्रीज. इवन यूएस वगैरह भी करते हैं, मतलब नॉर्थ एंड ग्लोबल नॉर्थ में भी करते हैं. बट यस, है ना. बट यस, हियर शी इज टॉकिंग अबाउट इंडिया एज अ फार्मेसी टू द वर्ल्ड और फार्मेसी टू द ग्लोबल साउथ, है ना. विद ह्यूज एक्सपोर्ट्स टू कफ सिरप्स. कफ सिरप्स वगैरह जो है अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में इंडिया काफी एक्सपोर्ट करते हैं, है ना. So that is what you should know. India's health policy with regard to pediatrics, यानी child pediatrics मतलब child care, health care से related, है ना. Medicine cannot be framed only on the basis of data on children available from other countries, है ना. तो ये सब बता रहे हैं कि आप जो पॉलिसी बनाइए comprehensive, सिर्फ अपने कंट्री का भी डेटा देखिए, बाहर की कंट्री का भी डेटा देखिए. ये सब these are the things we talked about, है ना. Toxicity of a cough syrup may be exacerbated by malnutrition. Exacerbated मतलब होता है मुसीबत होते हैं. तो हो सकता है कि थोड़ा सा पावरफुल दवा दिया जाए तो हो सकता है उनको डैमेज, मतलब ज्यादा इंपैक्ट कर जाए. दैट कैन आल्सो बी द रीजन. सो दीस आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. कि एक तो है कि आवर क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन शुड बी प्रॉपर्ली चेक्ड एटसेट्रा, एंड एट द सेम टाइम वी शुड एंश्योर दैट देयर शुड नॉट बी माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन. तो ये सब बात हो रही, ठीक है. देन स्लीपिंग death traps, again the same thing, we have already discussed it. That unfortunate incident of a luxury bus meeting with an accident, or I would say a hit, they hit a bike, then after that like the fire happened, etc., something like this. So that is what we have already discussed it. तो ये बता रहे हैं कि similar type of incident पहले भी हो चुका है, so थोड़ा सा dangerous है. तो वही सब है, सेफ्टी से रिलेटेड बात हो रही है, रोड सेफ्टी से रिलेटेड, है ना. सेफ्टी, एंड वी हैव सीन मोर इन केस ऑफ एयर कंडीशन बस में आग लगने का चांस थोड़ा सा ज्यादा होता है. And same is the case with in railways also, etc. and all. French Guiana is developing country. नहीं, फ्रेंच गुयाना फ्रांस के कंट्रोल में. ये वाला बोले हो ना, ये डेवलप्ड कंट्री है, ये फ्रेंच गुयाना. दिस इज अ फ्रांस टेरिटरी. तो डेवलप्ड कंट्री में आएगा, ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है. समवन इज आस्किंग. उसके बगल में जो गुयाना है वो इंडिपेंडेंट है, गुयाना एंड सरीनेम. बट फ्रेंच गुयाना इज फ्रेंच टेरिटरी. सो फ्रांस, तो फ्रांस यहाँ आता है ना, ठीक है.
खैर, सो ये टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, तो ये सब बात हो रही थी, दैट्स व्हाट यू शुड नो. द मिराज ऑफ पोर्ट लेट डेवलपमेंट इन ग्रेट निकोबार. अब बताइए विच पोर्ट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर बाय द ऑथर. Port led development in Great Nicobar. Which port is being talked about? उस पोर्ट का नाम क्या है? मैंने कई बार बताया, I've discussed it so many times, so I believe that you should be knowing it. Which port is being talked about? हाँ, Galathea Bay Port. Very good, Karthik. हाँ. So he's talking about the same, है ना? Following a spate of critical commentaries, a favorite argument is that the facility will position India as a regional hub for maritime security, economic growth, है ना? फिर ट्रांसशिपमेंट की बात की जा रही है ना? कमर्शियल ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, है ना? गैलेथिया बे पोर्ट की बात हो रही है ना? अच्छा, there is one more transshipment hub that has been made somewhere here. Recently तो नहीं कहेंगे, 2-3 months back, or I would say 3-4 months back, it was inaugurated in Kerala. One of the partner is Adani Group also in making that port. कौन से पोर्ट की बात हो रही है? India's first transshipment hub, Vizianjam port. Very good, हाँ, Vizianjam port. Yes, Kerala. ठीक है. तो ट्रांसशिपमेंट का मतलब भी मैंने बता दिया था, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएई से कोई बड़ा शिप आ रहा है, बिग शिप इज कमिंग, यहां पे आया, बिग शिप से स्मॉल शिप में ट्रांसफर हुआ, एक स्मॉल शिप चला गया कंबोडिया, अनदर वन वेंट टू इंडोनेशिया, अनदर वन वेंट टू ऑस्ट्रेलिया. सो दिस इज ट्रांसशिपमेंट. सो सिमिलर प्रपोजल इज फॉर गैलेथिया बे. अंडमान एंड निकोबार है, इसके जो लास्ट वाले यहाँ पे गैलेथिया बे पोर्ट, that it will act support to the port. Why it should be built is, one, it is a transshipment port. Second, अब देखो यहाँ पे है मलक्का स्ट्रेट, है ना? वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट है एज फार एज शिप्स आर कंसर्न. तो ये बहुत स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सारे शिप्स जाते हैं एटसेट्रा. स्ट्रैटेजिकली प्लस ट्रांसशिपमेंट हब, यहाँ लोकेशन देखो, यहाँ सारे शिप ऐसे आती है, बहुत सारी शिप आती है ऐसे इस रूट में, ठीक है? सो दैट्स वाई, है ना, फ्रॉम बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू. बट उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? द नेगेटिव इज एक्चुअली अबाउट एनवायरमेंट. सो देयर लॉट ऑफ आर्टिकल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि इट विल इंपैक्ट द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. तो जिसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वही एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट का पार्ट है ये गैलेथिया बे. जैसे ये 2-3 साल पहले आर्टिकल आई थी 2024 में ना, लास्ट ईयर आई थी, सॉरी, हाँ 2024, है ना? सो दैट इज व्हाट समवन हैज रिटन अबाउट गैलेथिया बे एंड it will impact. यहाँ पे mass nesting होता है giant leatherback turtle का, so they will get, world's largest sea turtle is, so they will get impacted. The nature will get harmed. Mangroves, etc., corals, turtles are there. Endemic Nicobar megaport is there. So if this boat is being developed, then it will lead to huge environmental loss. That is the other argument. एक favorable argument मैंने बताया कि transshipment hub बनेगा, strategic location है, etc. The other aspect is of environment. So these are the things being talked about. ठीक है, Galathea Bay suffers from deep structural limitation. It has no real hinterland, no urban center, industrial or logistic base to support the port. तो ये बता रहे हैं कि गैलेथिया बे में और बाकी चीजें नहीं है. जैसे आपको बताते हैं, देखो इस पे काफी बात हुई थी, इसमें भी देखो 13th और 14th मेजर पोर्ट में दिस इज स्लाइट कंफ्यूज. देखो ये वधावन पोर्ट है, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज 13th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया एंड गैलेथिया बे वुड बी द 14th. ठीक है, व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट because different articles were talking about differently. कहीं पे लिखा है कि गैलेथिया बे जो है ना वो 13th मेजर पोर्ट है, जैसे यहाँ लिखा ना कि 13th मेजर पोर्ट वधावन, है ना? So and in some news articles I saw that Galathea Bay being declared 13th major port. तो थोड़ा सा उसमें I could not find out which one is the perfect one, but जहां तक हमको मिला है वधावन is the 13th. तो वे बता ये रहे हैं, so he's actually saying कि the problem with Galathea Bay कि वहां पे लोग नहीं रहते ना, उसका बैक साइड जो पीछे उसकी और भी चीज, जैसे पोर्ट पे आए लेकिन उसकी पोर्ट डेवलप्ड होना चाहिए प्रॉपर्ली, है ना, इंडस्ट्रियल जोन होना चाहिए उसके पीछे. सो वो सब उतना नहीं है. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. अनलाइक कोलंबो व्हिच सिट्स विद अ डेंस वेब ऑफ शॉर्ट हॉल रूट्स लाइक साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, निकोबार कंपैरेबल, है ना, लैक्स कंपैरेबल कनेक्टिविटी. तो उनका कहने का मतलब उतना शायद कंपैरेटिव कनेक्टिविटी नहीं है. दैट इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, अब इतना डिटेल नहीं जाना है. Claims that Galathea Bay will integrate Vizianjam and Vadhavan to form seamless maritime are no less fanciful. मतलब वो कह रहे हैं कि पॉसिबल, मतलब उतना सही नहीं लग रहा है, ये इनका ओपिनियन है. तो वधावन हो गया, विजियांजम हो गया,
और ये गैलेथिया बे हो गया, ठीक है, ग्रेट निकोबार का पार्ट है, वधावन, वधावन पोर्ट मुंबई से जस्ट नॉर्थ में, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग, ओके, और इसमें कुछ खास जानने का नहीं। नेक्स्ट है सैंक्शनिंग रशिया, इस पर भी काफी आर्टिकल्स आई, बट वी हैव डिस्कस्ड आल्सो अर्लियर आल्सो। व्हाट इज हैपनिंग इज एक्चुअली, देखो रशिया ने ये कहा है, सॉरी यूएस ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड, in fact it has said to India also that you should stop buying Russian oil because India has been buying a lot of oils from Russia, and USA said ki since India is buying it, so India is paying the money and this money is being used by Russia against Ukraine. So that is why US was putting a lot of pressure. In fact, it has sanctioned Indian companies also. It has put a lot of pressure that India should stop buying the oil. In fact, Donald Trump has multiple times said ki Modi ji has already accepted this. So that is what you should be knowing. So Trump administration has imposed fresh sanctions on Russia as a punitive measure relating to Moscow's refusal to strike a ceasefire agreement, because Russia has still now not done a ceasefire agreement. And Russia की जो oil and company है उस पर बहुत सारे sanctions यानी economic boycott type something you can say has been imposed. Russia's use of the oil trade to finance the war has been a bone of contention for NATO members. ठीक है ना? So they have put tariff on India also uh, against, because we were buying oil from Russia, etc. US sanctioned Russian oil majors over Ukraine, India refiners poised to cut Russian crude. So Reliance Industries ने कहा है कि plans to reduce or seize imports of Russian oil, including halting purchase under its deal with Rosneft. Rosneft Russia is for oil refinery, largest oil refinery, Jamnagar, Gujarat. Okay, that is what you should be knowing. So these are the things. अच्छा, एक टॉक ऑलरेडी हो चुकी थी अलास्का में, नेक्स्ट वन बुडापेस्ट में होने की बात थी, बट एक्चुअली इट हैज बीन पोस्टपोन्ड. रोजनेफ्ट एंड देखो बुडापेस्ट समिट पोस्टपोन्ड. यहाँ देखते हैं, ये मैप देखते हैं, ये रशिया है इतना बड़ा सा, दिस इज रशिया, है ना? ये भी रशिया का हिस्सा ही हुआ करता था, दिस वन व्हिच इज नाउ कॉल्ड एज अलास्का, एंड आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर 1867 में इट वाज बाय यूएस. तो ये है, ये अलास्का है, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ क्लास का हो गया. Why the map is ठीक है. So this is Russia. ये Alaska, you can see this was also a part of Russia once, but now it is है ना, controlled by USA. So यहाँ पर Anchorage है ना, 1867 में bought from Russia. यहाँ पे अभी 15th August 2025 को there was a meeting between Mr. Putin and Trump. So not successful, मतलब partially successful जो भी को, there was some hope of talks to stop the Russia-Ukraine war. तो ये पहली समिट हुई. सेकेंड की जो बात हो रही थी वो दैट वाज अबाउट बुडापेस्ट. तो देखिए रशिया, ये यूक्रेन यहाँ पर है, ऑस्ट्रिया हंगरी पर, ऑस्ट्रिया के बगल में हंगरी. हंगरी's capital is Budapest. Okay. So basically Budapest में there was another meeting that was supposed to happen, but ये हो नहीं पाया. My friend talks collapsed and Trump cancels plan with Putin in Budapest. So let us see. So but also next Kremlin जो है ना, रशियन प्रेसिडेंट हाउस को कहते हैं क्रेमलिन. ठीक है, that's what you should know. Kremlin to applaud their potential impact on Kremlin's strategic calculus. ठीक है, let us see आगे क्या होगा. NATO तो आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हो so please search on YouTube NATO career launcher, you will get a video, please watch that, है ना. ये वाला एक आर्टिकल था, सुप्रीम कोर्ट to hear contempt plea over lawyers attack on CJI's bench. So actually क्या हुआ था, I'm sure you must be aware of this, that actually there was a lawyer who threw a screw on the Chief Justice of India. So होता ये there is a Contempt of Court Act 1971, and under which the Supreme Court can issue contempt order plus
Under Article 142 also, they have powers. They can issue contempt of court. Fine. So basically, the Supreme Court Bar Association filed a petition that contempt action should be initiated against Mr. Rakesh Kishore, who threw actually shoe on the Chief Justice of India. Generally, contempt of court act में क्या होता है? Contempt of court act 1971 says that if you want to initiate a contempt of court, attorney general should give permission. Generally, एक practice में लिखा हुआ है. So attorney general has given permission. That attorney general has consented to the initiating of contempt procedures. ठीक है ना? Attorney general is Mr. R. Venkatrapani, and this will be heard by Justice Suryakant. Okay, a bench of Justice Suryakant and Jamala Bagchi will hear the SCPM petition. Supreme Court Bar Association President. Supreme Court Bar Association has filed a petition in this regard. अच्छा, अब एक चीज पूछ रहे हैं. Justice B.R. Gavai is going to retire very soon, and will be having a new CJI next month. Who is the person who is going to be the next CJI? I believe that you all should be answering it. यहाँ लिखा हुआ जस्टिस सूर्यकांत. ठीक है, ये पता होना चाहिए. ठीक, गुड. ओके, सीजीआई ने तो क्या माफ कर दिया था एक तरह से, फॉरगॉटन चैप्टर एटसेट्रा. PM Modi will parade on 150th birthday of Sardar Vallabhbhai Patel. So who was Sardar Vallabhbhai Patel? What was his designation? राष्ट्रीय एकता दिवस होता है 31st October. That is his birthday. Sardar Vallabhbhai Patel was who? First Home Minister of India, first Deputy Prime Minister of India. Right. Yes. CLAT aspirant ज्ञान भारतम मिशन टू इंक पैक्ट विद इंस्टीट्यूट्स. ये थोड़ा सा पढ़िएगा. ये देयर इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द मैन्युस्क्रिप्ट, है ना. ज्ञान भारतम मिशन इसको कहते हैं. इंटीग्रेटेड ट्रेडिशन में टेक्नोलॉजी फॉर द फ्यूचर जनरेशन, है ना. मैन्युस्क्रिप्ट समझते हो, जो हाथ से लिखा हुआ पत्थर पे, ये कागज पर सब लिखा होता है, इसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट. आई एम श्योर यू नो, है ना. तो इसको प्रिजर्व करने के लिए इनिशिएटिव है ज्ञान भारतम मिशन. दैट इज व्हाट यू शुड बी. ठीक है, सो थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, है ना. Advertising veteran Mr. Piyush Pandey passes away at 70. इसको थोड़ा पढ़िएगा because he was actually in the news, and I think advertisement के field में बहुत famous personality थे. Okay, so he died recently. That is why you should be knowing. He was an Indian advertising professional and chief creative officer worldwide. Okay, he was the recipient of this award in Padma Shri 2016. So please read a little bit about him because it can be asked in the exam. Okay. अच्छा, who is the new Japan's prime minister? जापान के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था, and now we are having a new Japanese prime minister. I would say first woman prime minister also. समय ताकि yes, करती है, right. हाँ, Japan's new PM commits to higher defense spending, ties with India, quite, है ना. Quadrilateral figurative dialogue हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया, है ना. So Sana Taiki is her name. ठीक है, she is the new prime minister of Japan. Principality Guru इस्तीफा थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था. He had resigned, so now we are having a new prime minister. ठीक है, ठीक है. तो क्वाड भी हम डिस्कस है ना. जापान, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया का इनिशिएटिव है क्वाड, quadrilateral security dialogue. Please read about quad. That is also very important. So this is all about today's class. Please subscribe to the channel, press the like button, share the video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.